Assalamu alaikum, dear students. Last time we discussed the types of algae. Now there is the topic, our topic, that is bryophytes, or the group of plants that is called as Bryophyta. These includes mosses and liverworts. It includes the mainly two types, that is mosses and liverworts. And these are said to be the amphibian plants. Amphibian plants, as they are land plants, but they need water essentially for fertilization. फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर चाहिए essentially, इसलिए इनको बोलते हैं amphibian plants. And these have about 960 genera with 25,000 species. And their study is said to be bryology. Study of bryophytes is called as bryology. Now these are non-vascular cryptogams, you know that. Non-vascular cryptogams. Last time हमने कहा था that there are two groups of plants, cryptogams and phanerogams. तो ये cryptogams हैं, लेकिन ये non-vascular हैं, या इनको बोलते हैं lower cryptogams. Lower cryptogams भी हैं. And these are also called as non-vascular embryophytes. Non-vascular embryophytes. That means there is formation of embryo, but these plants are non-vascular plants. And these are characterized by the presence of an independent gametophyte plant body, independent gametophytic plant body, and there is a parasitic sporophyte. That is, this sporophyte is dependent upon the gametophyte. That is, sporophyte जो है, इसमें जो sporophyte बनता है, it is diploid, it helps in the formation of spores. तो ये dependent है on gametophyte. जो plant body है वो gametophyte है, वो बनाता है gametes. ये haploid है, ये gametes बनाता है. And you have to remember, sporophyte is dependent on gametophyte. तो main plant body जो है, that is gametophyte, because it is made up of haploid cells. ये haploid cells की बनी हुई होती है इसकी plant body, इसलिए इसको बोलते हैं gametophyte. और ये फिर gamete formation में help करता है. उसके बाद fertilization के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट. वो डिप्लॉयड होता है. हाँ, देयर इज नो जाइगोटिक मियोसिस, इनमें जाइगोटिक मियोसिस नहीं होती है, और वो डिपेंडेंट होता है लेकिन गैमेटोफाइट पे. एज पर देयर हैबिटेट इज कंसर्न, जो इनका हैबिटेट है, दीज आर फाउंड इन कॉमनली in the moist, shady places,
in hills, and these are also found besides walls के sides पे होते हैं ये. These are found on tree trunks. These are also found on logs, wooden logs, in shady areas, moist areas, during wooden logs during rainy season. But they prefer the shady places and moist places. Now there are a few, they are aquatic. कुछ हैं. A few are aquatic. कुछ aquatic हैं. There is one Rixia flutans. There is one Aurelia, etc. तो कुछ हैं जो aquatic हैं, and some grow as epiphytes. That means they grow on the other plants. They grow as epiphytes, other plants पे. Epiphytes. There is Dendroceros एक है, Dendroceros. And there are some, they are saprophytes. And some grow in deserts. There is Boxbonia, and some grow on the rocks, that is lithophytes. Rocks पे grow होते हैं वो. They are lithophytes. And there is one that is called as tortula. And you know, अभी मैंने कहा that these are plant body जो है इनकी है, that is gametophyte, that helps in the formation of gametes. And bryophytes are the land plants, small size land plants. These are small land plants, and their smallest जो है, smallest bryophyte जो है, that we call as Zupis, and it is 4 to 5 millimeters in height. And there is the largest जो है, it is Dawsonia. It is about 60 to 70 centimeters long. However, they are the small land plants. And there is no vascular tissue, that is, there is absence of vascular tissue. Absence of vascular tissue. Absence of vascular tissue. And these bryophytes, plant body जो है, plant body is more differentiated than algae. More differentiated than algae. इनकी plant body जो है, that may be thallus-like, it may be thalloid, thallus-like, or it may be prostrate. Prostrate मैंने last time कहा था, it may grow parallel on the surface of soil, or erect, या तो ये substratum के साथ होगी, rock के साथ होगी, या erect होगी ऐसे, and it may attach it to substratum by,
सबस्ट्रेटम, दैट मीन्स सरफेस, सबस्ट्रेटम हो गया सरफेस, किसी भी सरफेस से, रॉक से, सॉइल से, वॉल से, ट्री ट्रंक से है, हाँ, बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स, ये राइजोइड्स क्या होते हैं? these राइजोइड्स जो हैं, for instance there is a bryophyte like this. This has small unicellular or multicellular roots, root like structure, जो roots का काम करते हैं उनको बोलते हैं राइजोइड्स। और इसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं, and it may be differentiated into root like structures, root like जिसको हम बोलते हैं राइजोइड्स, leaf like structures that we called as phylloids, and it may have the stem like structure that is called as colloid, root like, leaf like और stem like structure। लास्ट टाइम भी मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ। तो रूट का काम जो है वो राइजोइड्स करते हैं, जिसमें भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये कुछ में यूनिसेलुलर है, कुछ में मल्टीसेलुलर है, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, हाँ, एंड देयर इज ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स वो एब्सेंट है, दैट मीन्स ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम्स आर एब्सेंट। एंड जो मेन प्लांट बॉडी है, द मेन प्लांट बॉडी जो है इट प्रोड्यूसेस, मेन प्लांट बॉडी जो है इट प्रोड्यूसेस द गैमीट्स, by mitosis, so it is called as gametophyte। तो आप याद रखेंगे, इसकी प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड सेल्स की बनी हुई होती है, और वो बनाती है गैमीट्स बाय माइटोसिस, इसलिए इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। एंड जो सेक्स ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स जो है इनमें, the sex organs in bryophytes, जो हैं, these are multicellular, the sex organs जो हैं these are multicellular and they are as compared to एल्गी, दे आर जैकेटेड। हमने पढ़ा था एल्गी में नॉन जैकेटेड होते हैं, यहाँ पर जैकेटेड है, कवर्ड है वो। एंड द मेल सेक्स ऑर्गन जो है इट इज लाइक दिस, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इसको बोलते हैं, और इस एंथ्रीडियम में होते हैं एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स, यहां पर होते हैं एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स, दे अंडरगो माइटोसिस एंड दिस एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड बाइफ्लैजिलेट, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। इससे जब बाहर निकलते हैं इट प्रोड्यूसेस बाइफ्लैजिलेट, दिस like this biflagellate antherozoids, male gametes उनको बोलते हैं हम
एंथेरोजॉइड्स। एंथेरोजॉइड्स यहाँ पर होते हैं बाइफ्लैजिलेट, इनके 2 फ्लैजिला होते हैं। दे आर मेल गैमीट्स। वाइल एज जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है, जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है, सेक्सुअल ऑर्गन दैट इज आल्सो मल्टीसेल्यूलर, दैट इज मल्टीसेल्यूलर, दैट इज आल्सो जैकेटेड, वो होता है फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क शेप्ड एंड इज कॉल्ड एज आर्चगोनियम। इसका प्लूरल है आर्चगोनिया, इसका प्लूरल है एंथीडिया एंड इट इज फ्लास्क शेप्ड लाइक दिस। And there is an egg. It is flask shaped, it is called as archegonia, और इसको हम बोलते हैं नेक, और इस पार्ट को बोलते हैं वेंटर। वेंटर, देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट द ओपनिंग, और इसमें सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स इसमें होते हैं। These we called as neck canal cells. इनको बोलते हैं हम neck canal cells. यहाँ पर एक बड़ी सेल होती है, that is partially in neck, partially in venter. उसको बोलते हैं venter canal cell. And there is a single that is egg. तो एक ब्रांच पे ये हो सकते हैं, एक ब्रांच पे ये हो सकते हैं। This is फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट है ये एग, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज oosphere, एग और oosphere इसको बोलते हैं। आई मे रिपीट, द मेल सेक्सुअल ऑर्गन इज कॉल्ड एज एंथीडियम। एंथीडियम उसको बोलते हैं, इट इज अ रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर, इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड बाइफ्लैजिलेट मेल गैमीट्स एंथेरोजॉइड्स। यहाँ पर माइटोसिस होती है, फिर ये रिलीज होते हैं यहाँ से बाइफ्लैज, इनके 2 फ्लैजिला होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंथेरोजॉइड्स, दीज आर मेल गैमीट्स। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो है, इट इज आल्सो जैकेटेड, इट इज फ्लास्क शेप्ड, ऐसे होता है फ्लास्क शेप्ड। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हाँ, इसको बोलते हैं नेक, और इसको बोलते हैं जो स्वोलन बेसल है, इसको बोलते हैं वेंटर, एंड इट इज कॉल्ड एज आर्चगोनियम, इसका प्लूरल है आर्चगोनिया। एंड दिस नेक जो है, इट इज ट्यूब लाइक, इसमें होते हैं 5 to 6 सेल, दीज आर कॉल्ड एज नेक कैनाल सेल्स। यहाँ पर एक लार्ज सेल होती है, उसको बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल, और एट द बेस देयर इज अ लार्ज फीमेल गैमीट दैट इज एग और oosphere। एंड एंथेरोजॉइड्स जो हैं, एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड, एंथेरोजॉइड्स जो हैं, these एंथेरोजॉइड्स जो हैं, दे आर रिलीज्ड, एंथेरोजॉइड्स आर रिलीज्ड in water, are released in water, and then they come in contact with the archegonia. They come in contact with archegonia, as they come in contact with the archegonia, there are the lid cells यहाँ पर होते हैं, lid cells। हाँ, तो ये नेक कैनाल सेल्स और वेंटर कैनाल सेल दे गेट डिसऑर्गेनाइज्ड, नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल दिस गेट्स डिसऑर्गेनाइज्ड, इट फॉर्म्स द म्यूसिलेज, ये बनाते हैं म्यूसिलेज लाइक सबस्टेंस, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एग। जब ये अट्रैक्ट होता है, इट कॉजेज द फर्टिलाइजेशन। सो वाटर, यू हैव टू रिमेंबर, वाटर इज एसेंशियल फॉर fertilization. Water is essential for fertilization, and you know now this sexual reproduction जो है, it is oogamous type. oogamous type है ये sexual reproduction, oogamous type है ये sexual reproduction, और that is male gamete जो है, male gamete जो है, it is male gamete is
small, it is active, and male gamete is active, and it is active, it is small, it is flagellate, while as female gamete is large, it is passive, and it is non-flagellated. Now, fertilization जो है, it occurs inside the archegonium, and this archegonium जो है, it is attached to plant body. ये attach होता है किसके साथ? Plant body के साथ होता है attached ये archegonium. तो archegonium में होती है fertilization. The egg जो है, it gets fertilized with the help of the antherozoid, and it forms the diploid zygote. उसके बाद बनता है diploid zygote. Diploid zygote जो है, it may not undergo meiosis. It divides. It produces multicellular. It divides mitotically. Zygote जो है, it divides mitotically, and it forms हाँ, यहाँ से ये प्लांट बॉडी है. दिस इज द प्लांट बॉडी. दिस zygote जो है, it divides, it forms a body that is called as sporophyte. इसको हम बोलते हैं sporophyte. It is it is made up of diploid cells because it develops from the zygote or oospore इसको बोलते हैं. And this multicellular sporophyte जो है, it is not free living. It is attached to photosynthetic gametophyte. ये gametophyte है, इसके साथ ये attach है, and it derives the nourishment from it. It derives the nourishment from the gametophyte, and it is differentiated. So it is dependent upon gametophyte. ये है gametophyte, plant body, gametophyte. And it is differentiated into 3 parts. इसको बोलते हैं हम कैप्सूल, और जो इसके साथ अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं फुट. इट इज फुट. और ये लॉन्ग जो है, इट इज कॉल्ड एज सीटा. इट इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल. इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल, और समटाइम्स फुट एंड कैप्सूल. तो कैप्सूल होता है, और इस कैप्सूल में दिस कैप्सूल हैज the large number of cells. Those are called as spore mother cells. इसमें रहते हैं spore mother cells. Spore mother cells इसमें होती हैं. These spore mother cells जो हैं, they undergo meiosis और reduction division. These spore mother cells जो हैं, spore mother cells undergo reduction division or meiosis, and it forms the haploid cells. Those are called as spores. These spores जो हैं, each spore germinates to produce. Each spore जो है, usually only one type of spore is formed. That means the bryophytes जो हैं, they are mostly homosporous. That means one type of spore is formed. As these spores are released from the capsule, ये capsule जो है, ये डिहाइस होता है, और उसके बाद स्पोर जो है, स्पोर होता है हैप्लॉइड. एंड these meiospores जो हैं, these are haploid
and these are uninucleate, and it may directly or indirectly develop into new thallus or new plant body. ये एक नई प्लांट बॉडी में ग्रो हो सकता है, एंड thus तो ये जो स्पोरोफाइट है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोरोगोनियम बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ओनली द स्पोर्स, ये बनाता है स्पोर्स. दिस स्पोर जो है इट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट बॉडी. और इन मॉसेस में जनरली ये स्पोर जो है इन मॉसेस इट फॉर्म्स ए जुवेनाइल शॉर्ट अंडर डेवलप्ड स्टेज ये बनाता है, एक स्टेज ये बनाता है, ऐसे बनाता है ये स्ट्रक्चर. उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा. This protonema has also the buds like this. It has the buds. It is called as protonema, and protonema can later on develop into new plant body. ये एक नई प्लांट बॉडी में जा सकता है बाय बड्स और बाय फ्रेगमेंटेशन. ये प्रोटोनीमा हाँ एक जुवेनाइल स्टेज है किनमें, मॉसेस में. While as in liverworts जो लिवरवर्ट्स है इनमें स्पोर जो है इट डायरेक्टली डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट बॉडी. इन लिवरवर्ट्स स्पोर डायरेक्टली डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट बॉडी, जर्मिनेट होता है इनटू न्यू प्लांट बॉडी, एंड दैट इज हैप्लॉइड. दस द लाइफ साइकिल जो है इनका ब्रायोफाइट्स का वो है हेटेरोमॉर्फिक, और दैट इज heterologous, and it is said to be diplohaploidic. इनका लाइफ साइकिल जो है इनका है डिप्लोहैप्लॉइडिक और हैप्लोडिप्लॉइडिक. It is characterized by alternation of generation. That is a haploid, that is gametophytic phase is followed by a sporophytic phase, and these are morphologically dissimilar. Gametophytic phase and sporophytic phase are जैसे मैंने कहा आपसे इट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है, इसलिए इनके लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम बोलते हैं इट इज हेटेरोमॉर्फिक और हेटेरोलॉगस. इट इज हेटेरोमॉर्फिक और इट इज हेटेरोलॉगस इसको बोलते हैं.